أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تدينا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من النخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار
وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بأسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل
الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد जज़ाकल्लाह भाई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा اللهم صل على محمد وعلى محمد वअज्जिल फरजहुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन्नहु क़ाल अन फ़ातिमा अज़-ज़हरा इलाहा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाला समिअतु फ़ातिमा अन्ना क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाहि बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकि या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लुज़िक़ बिल्लाहि या अबता मिन अज़्ज़ाफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतिनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैनि बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़तैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी तमामिही व कमालिही अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वमा कान फ़ातिमा बिवलदिल हसन क़द अक़बला वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनि ज़मरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका तहतल किसाय फ़अक़बलना वल किसाय वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अदख़ुला मअका तहतल किसाय फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वमा कानत फ़ातिमा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बला वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्मह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रता ऐनि ज़मरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसाय फ़ग़तैना वल किसाय वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका मन इख़्तारहुल्लाह अतअज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाय फ़क़ाल वअलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फ़अक़बल अंद ज़ालिक अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु वअलैका अस्सलाम या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा व मा वलदका तहतल किसाय फ़अक़बल अलियुन वल किसाय वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाय क़ाल लहू वअलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन तहतल किसाय अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सुम्मा अतैतुना वल किसाय वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबता या रसूलल्लाह अतअज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाय
क़ाला वलैकुमुस्सलाम या बिन्ती व या बिज़अती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तातल किसाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फलम्मा इक्तमलना जमीअन तातल किसाए क़ज़ा बि रसूलुल्लाह बितरफ़िल किसाए व मा यबयदु मिनस समाए व क़ाला अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लामुहुम लाहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्ना मिन्नी व अना मिन्हुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहिरुम तथीरा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन व मुहम्मद व आले आले मुहम्मद मुहम्मद। वज्जल। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाती इन्नी मा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़य्यितन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला बिमहब्बति हाउलाइल ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किसाए। फ़क़ाल मिन जिब्रील या रब्बि मन तहतल किसाए। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैति नबुव्वा व मादिन रिसाला हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद। वज्जल फरज। फ़क़ाल जिब्रील या रब्बि अतअज़नु लिअन अहबित इला अर्ज़ि लियकुना मअहुम सादिसा। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका। फहबत मिन जिब्रील वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल अलियुल आला युक़रिउका सलाम व यख़ुस्सु बिताअति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वला वर्दन मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़य्यितन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम महब्बतिकुम वक़द अज़िना लिनदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु लि या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह वलैकुमुस्सलाम या मिना वहियल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लका। फ़दख़ल जिब्राईल माअ तहतल किसाए फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द अहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तथीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व मुहम्मद आले वज्जल मुहम्मद। फरज। फ़क़ाल अलीयुन लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना तहतल किसाए मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिम रहमतुहु व हफ़ज़ल मलाइकतुहु वस्तग़फ़रत लहुम ला यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलियुन इज़्ज़मल्लाह फ़ुज़ना बाद शिअतुना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानिया या अलिय्यु वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्मुन मिन शिअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहि मअमूमुन इल्ला व कशफ़ल वफ़ी मामुल्ला फ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूम इल्ला वकशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिबु हाजतिन इल्ला वक़ज़ल्लाहु हाजता। फ़क़ाल अलियुन इज़्ज़मल्लाह फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिक शिअतुना फ़अज़्ज़ु व सुइदु फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला अला मुहम्मद व आले आले मुहम्मद मुहम्मद व अज्जिल वज्जल फ़रजहुम। फरज। जज़ाकल्लाह। एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है तमाम मरूमीन के लिए जो अहले बैत सेमेट्री सेक्शन 18 में, वैली ऑफ पीस सेक्शन 1 में और तमाम मरूमीन खुसूसी मरहुमा सारा अली बिनते फातिमा सुल्तान अली के लिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। शेर दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन है। शेर दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन है। दोनों आलम में मेरे मौला का हमसर कौन है। सच बताना मेरे मौला के सिवा बादे रसूल। सच बताना मेरे मौला के सिवा बादे रसूल। सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे आला कौन है। सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला कौन है। शेरे दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन। करके मरहब को तो पारा, हंस के बोली जुल्फ़िकार। करके मरहब को दो पारा, हंस के बोली जुल्फ़िकार। अब समझ में आ गया होगा कि हैदर कौन है। अब समझ में आ गया होगा कि हैदर कौन है। अरे शेर दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन। दोनों आलम में मेरे मौला का हम सर कौन है। क्यों न ले जिन्नो मलक मौला अली से मशवरे। क्यों न ले जिन्नो मलक मौला अली से मशवरे। को है मालूम शहरे इल्म का दर कौन है। उनको है मालूम शहरे इल्म का दर कौन है। अरे बन गया है एक नया दर, किसके इस्तकबाल में। बन गया है एक नया दर, किसके इस्तकबाल में। बता तेरा रजब काबे के अंदर कौन है। बता तेरा रजब काबे के अंदर कौन है। शेर दावर कौन है,
नफ्से पैगंबर कौन है? असगरे बेशीर के दादा का हूँ मैं भी गुलाम। असगरे बेशीर के दादा का हूँ मैं भी गुलाम। अब कहो सजाद के कद के बराबर कौन है? अर्श मेरे दावर कौन है? नफ्से पैगंबर कौन है? दोनों आलम में मेरे मौला का हम सर कौन है? सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। Me, and you'll see me come to save you. This is the living Imam, it's the Hujjat of Allah in this world. Look, your Imam is alive. The beauty of having an Imam who's alive is that when you're in problems, call upon him. And it becomes incumbent upon the Imam to come and help you. As the Imam says to Muqaddas al-Dabili, you read this tradition. Mawla, where are we going to find you? You ask us to call upon you. What does he reply? He says, don't worry, I'll find you. You call me though. Call me. I'll find you. I'll come to you. I'll help you. All of you are the followers of the 12th Imam, right? Why do you sit there thinking you don't have a helper? Everything is there. Each one of those Imams are saying, call upon me now, call upon me now, call upon me now. And when you're deeply in problems and there's no way out, 12th Imam says, come and call me. Call me. The du'as of the 12th Imam are there. Right? Du'as of the 12th Imam. They say the du'a of the 12th Imam is accepted faster than any of the du'as. It's been translated into English now, there's 42 du'as, go and find them. Your World Federation, when they went to Ayatollah Sistani a number of years ago, he gave a du'a, right? It was published on your website. What was that du'a? Well, Ayatollah, somebody asked him, they said, Agha, what du'a do you recite that's taken you out of these problems and brought you here? He says, I recite one of those du'as of the 12th Imam. It's du'a number 12. If you go to the book, you'll see it. It's published by the Muhammadi Trust. You can go and buy it. Everything is there now in front of you. Ulama have said the du'a of the 12th Imam goes like that, faster than all of the other Imams. Why? Because he's your living Imam, that's why. So make a connection with your living Imam. Go and find these du'as. It's there. The beauty is there. Coming back. Time is ticking, 9th Imam. 3 things I'm going to say about him and that's it. Specifically for you to learn. You know, I'm not here now as a narrator. I'm here now to pass on the message so that you can benefit from your life. You know, they say it takes half an hour for an engine to warm up. So I'm going to say very quickly 3 things and that's it. Apply it in your life. One of them is what? One of them is this. Look at the taqwa of the Imam. I'm going to mention and then you can understand it. They say that when the Imam is in the streets of Medina, right? And Ma'amun is riding and he comes in, all the children scatter. So that Imam is standing there though. So Ma'amun looks at him and he says, listen son, all of your kids have run away. Why are you not running away? You're only, 7 years old? And he replies and he says, look, this road is big enough for both of us. And he looks at him and he says, a child like you is giving a statement like that. Who are you? And at the moment he replies, he says, I am the son of so-and-so. The enemy knows, right? Enemy has different ploys. Understand, enemy changes their tactics. So the first message is this. You also change your tactics. If the enemy does, you do. It's not all linear, right? It's not all one way. Look at all of the Imams and see all of the Imams change their tactics.
Fourth Imam was different from the fifth Imam, was different from the sixth Imam. Which is the only Imam that stood up, or two Imams stood up. Two Imams stood up. One is Amir al-Mu'minin, the other one is Imam Hassan. It is wrong today that we say, you know, when you want to give an example, right? When people stand up, you say, stand up like Sayyid al-Shuhada. Go and fight against the oppressor like Imam Hussein. And when you want to sit down and make a peace treaty, you say, why don't you stand up like Imam Hassan? It's actually the other way around. Imam Hassan was ready on the night that Amir al-Mu'minin died with 40,000 men to fight against Muawiyah. Imam Hussein wasn't like that. Imam Hussein never came out to fight. Imam Hussein said one thing. He said, I'm not going to fight, but I'm not going to give Yazid bay'ah. See, technique changes again. He says, I'm not going to give Yazid bay'ah, but I'm not here to fight. He moves from Medina to Mecca. Why? He says, I'm not here to fight, but I'm not going to give Yazid bay'ah. He moves towards Kufa. He says, I'm not going to give Yazid bay'ah, but I'm not here to fight. Why? Technique changes. Today, you hear and we hear that Imam Hussein stood up against dhulm. No, Imam Hussein stood up to change the hearts of the people and to awaken the consciousness of the people. Had Imam Hussein stood up against dhulm, there wouldn't be no dhulm today. But there's dhulm today. And there was. Look at Yazid when he ransacked Mecca and Medina. Dhulm was still there. Imam Hussein's not Malcolm X in the way that we compare him. Imam Hussein is not Martin Luther in the way that he's not Gandhi. Imam Hussein was there to change the hearts of the people. You know what inqilab means? Inqilab comes from qalb. Qalb is to rotate. He was there to rotate the hearts of the people back towards Ahlul Bayt. This is why you find 30 million people gathered in Arba'in, because Hussein won and Yazid lost. My time's been extended. Another salawat, please. So in this way, ninth Imam, again changes technique. The enemy changes technique. He says, look, we've poisoned them, we've killed them, we've destroyed them. Why don't we do something that's going to change the whole course of the game? Ma'mun says, why don't I take this ninth Imam and bring him to my palace? If he's under me, maybe I can influence him. And you know what, I'll give him my daughter as well, so he has a liability upon his shoulders. Other people have tried that as well. Go look at history and see. Didn't save them. Says, maybe I'll give him my daughter, keep him under me. It's possible we can restrict the Imam. Now understand one thing. None of the Imams bar one was there hatred for them because of them themselves. It wasn't a personal hatred. Look at any of the Imams. Sixth Imam, what does Mansour say? He says, I don't hate the sixth Imam. It's just the fact that I can't stand his justice. He's a nice guy, but the fact is that his character I can't stand. None of the Imams are hated because of their personality. It's because of their character to do good. That's why they're hated. Bar one Imam, and that is Amir al-Mu'minin. Amir al-Mu'minin, people hated him personally. This is why we've been told that if a person dislikes Amir al-Mu'minin, ask them what their mother has done. Not for the rest of the Imams. Only for Amir al-Mu'minin. You find all the hatred wasn't personal. The hatred is personal. Yazid didn't say about Imam Hussein. What did they say about Imam Hussein? They said, we hate your father. Why was it personal? Because Amir al-Mu'minin was that person who was the hands of the Prophet. And he put to death many of their ancestors, so it became a personal grudge. Other than that, none of the Imams was a personal grudge. If you look at all of the Khalifs, what do they say? They say, look, these Imams, it's not a personal issue. It's the fact we just can't stand their justice. They tell us off. We want to drink, they tell us not to drink. We want to commit an indecency, they tell us not to commit an indecency. Amir al-Mu'minin was that person who they had a personal grudge with. This is why, to appreciate and understand Amir al-Mu'minin as part of your faith, enemies of Amir al-Mu'minin are who? Munafiq. That's why. Who says? Sunnis say, right? In which? Bukhari. Go and read it to see. What's the tradition? Whenever we wanted to know Munafiq amongst us, we would do the dhikr of Ali ibn Abi Talib. If smiles came on the faces of the people, we knew they were the believers, and those people who looked dejected, they were the munafiqs. This is Amir al-Mu'minin. This is the ishq of Amir al-Mu'minin. This is what the Prophet of God said. This is when he talks to Amir al-Mu'minin, he says, Ali, even if you were to chop the necks off, those people who love you will still love you.
Think about it. Look at your heart and see. Even if the Imam was to chop your neck off, you'd find you'd still stand up and say, Ya Ali. The followers of Amir al-Mu'mineen are such. What do you find? You find Imam comes to the body of Salman. Salman has left this world. He says, Salman. Salman stands up. He says, Ya Amir al-Mu'mineen. This is Amir al-Mu'mineen's companions. Even death doesn't stop them from getting to the Imam. Right? Even death doesn't stop. Because death is only a connection which brings us closer to the Imam. So, the milak is the ishq of Amir al-Mu'mineen. Here, Ma'mun says, let me take the ninth Imam. And there's a very famous munazara that takes place as well. He brings the ninth Imam. And he says to all of his courtiers, this is still the son of Zahra. Now test him. Test him. So at that moment they ask, and there's a famous story in front of you. They ask him about, I'm in Ihram, I go hunting, what happens? Imam looks at him and he says, your question is incomplete, my friend. Was he free? Was he not? Was he man? Was he woman? Was it umrah? Was it? And it's in front of you. Imam now asks the question. He said, listen, let me ask you a question. Can you tell me, when is it that a woman is haram on you, then halal on you, then haram on you, then halal on you, then haram on you, then halal on you, then haram on you, then halal on you, all in the same day? The guy looks up and he says, man. He goes, even the Khalifa doesn't get through that much. He goes, why don't you tell me then? Small boy, 8 years old, stands up and he says, shall I solve it for you? He says, yes. He said, let me solve it for you. Fajr time comes. You see the slave of another man, haram on you. He frees her, halal. You marry her. And in this way he goes through, marry her. What happens? Becomes halal. Then after that, you say, for example, she's like the back of my mother. Becomes haram again, then you give kafara, then she becomes your wife again, then again you divorce her. In this way, he continues and he goes up to midnight. He says, in this way, 8 tarkeebs. And they sit down and they say, well, this kid, you're trying to tame him, you're going to give your daughter to him? You can't tame this guy. There's some knowledge that he's getting that goes back to alam e mawara. His knowledge is not normal knowledge, it's something special. So the Imam says, fine, I'll marry your daughter. What does the Imam do? 500 dirhams, he says, I'll give. But there's something else, and this is the second message for you. Go to the Mafati and see. What does the Imam give? He gives 10 du'as. And these 10 du'as are a solution for any problem that befalls your life. Why did the Imam give this? He knew that openly if I give them, I won't be able to, because Ma'mun is watching over me. So what I'll do is I'll give it in the meher to my wife. I know she'll never read it, but there are people who are coming who will read it. 10 du'as the Imam gives. Institutionalizes these du'as. Shaykh Abbas Qummi narrates the du'as. Go and look at it and read it up. These 10 du'as, solution for anything. Solution for anything. Final point. Second, third point. And that's it. Third point is this. Imam later on goes and marries a descendant of Abu Dhar. At that moment his wife becomes quite jealous. When it happens. Fine within traditions. So she goes running to her father. She says, who have you married me to? You know, this guy's of this character, that character. Slanderous accusations. At that moment, they say, Ma'mun so far had been very diplomatic, quite intelligent guy. Here he loses it. He was drunk. He comes, and you know the story. Comes to the Imam at night time, takes his sword out, slices the Imam up, goes back. Morning he gets up, opens his eyes, realizes that he's done something wrong, says to one of his servants, why don't you go and see what's happened to the Imam? This guy goes back, he sees the Imam is completely salim. Again he comes back, he says the Imam is completely okay. Ma'mun now comes and he asks him, he says, I was drunk, but I wasn't that drunk. I cut you up last night. How did you come back? He says, there's a ta'weez that I tie on my arm. And this has been given by my grandmother. And has been passed down father to son, father to son. This protects me. It's what you call Hird Jawad, right? But the reason I said all of this story was for this point. The Hird Jawad that you wear has no effect until you don't do what the Imam says. For example, Imam writes, it should be on the back of a deer, written in saffron on the back of a deer. It should be in iron molded round, or silver molded round. There should be a dua on that. And then after that it should be tied on your arm, or you wear it as a ring. Now this ring was made specifically
Only 70, 80 years ago, it wasn't before that. People didn't wear hairs of jawad on their finger. One of my teachers, Ayatollah Hafiz Yan, was the person who first made it into a ring form. Otherwise, before that, there was no one who would make it into a ring. And then if all of those sharait is there, then there's a 4 unit of prayers that you have to pray. And in those 4 units, 2 and 2, you recite Hamd, and you recite Ayatul Kursi 7 times. And in the same way, you recite Ayah Shahada 7 times. And then after that, you recite Surah Shams 7 times. And then Surah Layl 7 times. And then after that, you finish by reciting Surah Tawheed 7 times. And only then does Hird Jawad become activated. Not just you go to any shop and you buy it. There are not many shops that do the real one. The ones that the majority, 99% of people have, they have other hairs in it. But it's not Hird Jawad, the one that protects you from evil eye. And the one that protects you from your enemies. And the one that gives you risk. And the one that helps you in your health. All of those things, a special tarkib of Hird Jawad. So this is why it's important that when you do something, do it correctly. 3 things I wanted to mention, and those 3 things nisbat to the 9th Imam we've mentioned. Final thing is this though. Remember one thing. If you look at the life of the Imam, and I'm closing here, it is this, that each one of our Imams did what? What did they uphold? And this is a message for all of us. Each one of them, regardless of the fact that even if their life was in danger, upheld truth and upheld the wilayah of the Imam alayhi salam. All of this goes back to one thing. Today, if the world is where it is, if today Shias are being killed, what is the reason why Shias are being killed? Is it because they're being killed because of the way that you pray? They don't care how you pray. How you go on Hajj, they don't care how you go on Hajj. The way you give khums, they don't care how you give khums. If today Shias are being killed in the world, it is because of one reason, and that is the ishq of Amir al-Mu'mineen that you have in your heart. Take a message from the 9th Imam. He was poisoned young, but there was one thing he upheld, and the same thing we need to uphold as well. Teach your children this and uphold this, and that is the wilayat of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Pray to Allah that on this blessed night, Zahra, for the sake of your son, Imam Muhammad Taqi al-Jawad, please ingrain the wilayah of Amir al-Mu'mineen to all of our hearts, so that no enemy can take it out of our hearts. For the sake of Muhammad and Ali Muhammad, and may Allah remove all of our sins and remove our difficulties that may be within our life. For the sake of this blessed night, may Allah remove differences that may be in our community and bring us all together. For the sake of Muhammad and Ali Muhammad, all those people who are ill today, people who are suffering today, in whatever capacity, for the sake of the 9th Imam, may Allah remove all of that. May Allah hasten the dhuhur of the Imam alayhi salam and make us all part of his ansar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. मुतवज्जे ज़ियारत होते हैं हम अपनी जानिब से, अपने वालिदैन की जानिब से, अपने दीगर मरहूमीन की जानिब से, और खुसूसन उन मरहूमीन की जानिब से कि जिनकी जानिब से अब कोई पढ़ने वाला नहीं। पहले दुआ फर्रज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरअल गफ़ा व अनकशफल ग़िता व अनक़तअर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनियतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़्ता अलैना दावतहुम व अरफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसरि व अक़रब। या मुहम्मदो या वलियो या अलियो या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान।
या मौलाना या साहिब ज़मान अल-गौस 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 अदरिकनी 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 अस्साद 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 अल-अजल 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 या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मुमिनीन वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदनिल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या इब्न अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतज़-ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या सारल्लाहि व इब्नस सारी वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द क़मतस सलात व आतैतज़ ज़कात व अमरत बिल मअरूफ व नहैत अनिल मुनकर व अताअल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन व लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतक व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतक व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फ़रज़ियत बि। या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल इस्लामि शामिखा वल अरहामिल मुतahhira, लम तुनज्जिसकल जाहिलियतु बिअनजासिहा व लम तुलबिसका मिन मुद्दइम्मात सियाबिहा, अशहदु अन्नका मिन दआइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन, वअशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ीक़ुल हादियुल وأشهد أن الأئمة من ولديك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والحجة ولا أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله بي بكم مؤمن وبيا بكم مؤمن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم। ज़ियारत अली अकबर अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्नल हुसैन अश-शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्नुश शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतक व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतक व लअनल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका व रज़ियत बि। ज़ियारत शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाहि व अहबाह, अस्सलामु अलैकुम या अस्फिया अल्लाहि व अविद्दाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अमीरुल मुमिनीन,
अस्सलामु अलैकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी मुहम्मद अल हसन इब्न अली ज़की नासी। अस्सलामु अलैकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह बेअबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व दावतुल अर्ज़ुल्लती फीहा दुफिनतुम व फुज़्तुम फौज़न अज़ीमा फया लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ मअकुम। ज़ियारत हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास या इब्न अमीर अल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैका या इब्न सय्यदिल वसी। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिय्यु लिल्लाहि व लिरसूलिहि। अस्सलामु अलैका या अफ़ज़लुश शुहदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारा जमिया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या रहमतुल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुअमिनीन। अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा। अस्सलामु अलैका या खदीजतल कुबरा। अस्सलामु अलैका या शहज़ादी ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या हसन मुश्तबा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन व अला तिस्अतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिक अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल हुज्जत इब्न अल हसन अज्जल्लाहु फरजक सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअलना मिन आवानिक व अंसारिक। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ियारत अहलल क़ुबूर। अस्सलामु अला अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह या अहलि ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह कैफ़ वजदतुम क़ौल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन ला इलाहा इल्लल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह इक़बल लिमन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व शुन्न फी ज़ुमरति मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन अंतुमुस साबिक़ून व नहनु इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहिल अरवाहिल फ़ानिया والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ندخل عليهم روحا منك وسلاما مني. اللهم ولهم ما تولوا واحشرهم من أحبوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है तमाम मरूमीन के लिए, खुसूसी मरूमा सारा अली बिनते फातिमा सुल्तान अली।